कोई मेरा सीजन तेरा मेरा तो धोनी को है साल भर धोनी सूट रहा है, मतलब पहली बार पहना, पहले बार रोज भी पहना नहीं था, परसों भी नहीं पहना था, तो झूठ बोल रहा है। नहीं परसों पहना था, समझ में नहीं आता एक बार कल भी पहना था, कंपलसरी है, कल भी पहना था मैंने, इसका कोई रीजन ठीक है चलो, बाकी लोग तो कोई मैंने कल भी पहना था, लेकिन हाँ कल पहना था मैंने, याद है कल पहना था, कल रात को ही तो धोने डाला। तेरा विषय क्या है प्रिंट आउट के लिए, क्या आएगा जल्दी डबल एक्सेल ना आएगा पूरी प्लेटिंग इतना बड़ा साइज लास्ट बॉक्स की राजनीति आजा वर्ल्ड वन एफसी सुनना वे सुनना सुनिएगा घर पे आ अभी तो जींस पहना था, पैंट चेंज कैसे हो गया? अभी तेरे बाल तो छोटे छोटे क्यों हो रहे हैं? अभी तेरा बाल गिर रहा है क्या? इधर से कितने बाल है तेरे? माला का नाका ना, माला बोल होते हैं। सुना, उसका अच्छा दिखाना। मेरे फोन में चल रहा है। गलती क्यों है तेरा? ये तुझे नहीं आना। यार यार 22% चल मार बहुत जल्दी आ गया जी क्या भी रेडी नहीं हट क्या कर रहे हो टैक्सी मिल गया और
क्या वो पीटीएम है मेरी है मम्मी अच्छा होगी सीधी का अच्छा बोली गीता कुछ नहीं बोली अबे नीता इतना नहीं बोल कुछ देखा नहीं अबे आना देखा नहीं अपने राजी को बुरा नहीं बोली तू देख पूरा कॉन्फिडेंस से करेगा तो बहुत अच्छा सही में ये मेरे को 38 का एक्सपेक्टेशन था मेगा मैन 32 इसका भी 30 रुपए एक्सपेक्टेशन मेरा था 32 अच्छा लेगा मुझे अबे इसका भी 30 रुपए कितना है ना 32 ना 3 बैटरी तो मुझे में जा रहा है बस में वापस हो गया और मैंने 20 रुपए कब देगा कल का क्या कल का वो अच्छा विषय किस चीज का विषय मामला होगा नहीं कुछ नहीं है फिर ऐसे कोई मामला माला कर देना 20 रुपए मांगा 10 रुपए वापस आ गया 20 पे 10 मेरे पास है, मैं उससे 10 रुपए वापस ले काम 30 रुपए इसका मेरा 10 रुपए कब दे रहे तेरा होगा 10 रुपए ये वो गेमिंग क्या है क्यों नहीं दे रहा अबे गेमलेट का तो हमारा इक्वल हो गया था इक्वल हुआ था याद है हाँ उससे सबका इसको नहीं सबका इक्वल नहीं आता सबका नहीं वाला मेरे का हुआ था इक्वल हट सबका नहीं आता 10 रुपए कब दे रहे गेमिंग का ये बलाश ऐसा पॉकेट में क्या आता उल्टा है क्या वो अरे पीछे पॉकेट क्यों होगा आगे बोल रहा हूँ क्या बोल रहा है अरे नहीं कर रहा ऐसा नहीं है तू क्यों कर रहा है Thank you. चलो चलो we'll continue. चलो he is coming late and he is going that side only. किधर भाग रहे थे? तुझे लगेगा अच्छा तुझे कैसा लगा अभी 6:20 का लेक्चर है 6:30 हाँ 6 कौन बोला तुझे होता है सर ज्योग्राफी कुछ है होता है ज्योग्राफी का ही होता है जरा मैं भी सिखा रहा हूँ जरा 6:30 का एक्स्ट्रा होता है भाई साहब को 1 घंटा सोने का था सो के मन उठ के बाहर आया और अभी बोल रहा है नहीं ज्योग्राफी के साथ ही ऐसा होता है अरे फिर वेट बेटा अरे बात नहीं बोल पहले तो नजदीक तो ये बैठ सकता है कि उधर को अभी इसका प्रॉब्लम सॉल्व अरे उधर के रखो नया ये ट्राई इधर तक रखो ये मेरा है come here I am not going to hit you remove that space now try to wait where the space क्या हुआ अरे where हम दुनिया कैसे दिखता है आधा दिख रहा है हाँ तू वही आधा ही दिखता है अच्छा देख रहा है तू देखो he was the first person to be in second he jumped in somehow अरे ये आराम से जाके हाँ सर अभी पहले चलो जाने दो we'll wind it up okay Mediterranean region लिखा हाँ now this region is which is having maximum what maximum beaches maximum and nobody wants to miss these regions as per the video also and as per when you will visit also you will see most pleasant climate throughout the year the temperature is 23 to 24 throughout the year neither too hot nor too cold plus they have good drizzle beaches we can see scenic beauties and so and so I mean, you go for a picnic and you remember it for the next 2 weeks. Why is it so? Kitchen of the lectures, it is the sights, it is the air, or it might be the go. I don't know how many goes to that Moraj ka opposite ground. If you get on Sunday, early morning you go and there are dews on that grass. It's not a grass. You see greenery. You try to walk barefoot. Early morning, that chillness will right from your toe, it will go up till your head. And that itself is a nourishing effect. And they say people keep on looking at the green color. ये जो अभी हम लोग पहन रहे ये भी नहीं कर सकता। हम ग्रीन कलर देखते हैं हमने टीवी में, है ना?
You know that there is one game, what is that, वो colorful balloon जैसा आता है, what is that game? मोबाइल पे भी हम लोग खेलते हैं ना, colorful आता है। Now, solitaire नहीं, और एक कुछ है। Doctors बोलते हैं that game if you keep playing at that colorful balloons like comes that really cures. वे हमारा बच्चा इतना complicated game का तो इधर से उधर चालू है। उसका दिमाग देखो कितना फास्ट है, बट जैसे ही पढ़ाई ना तो पूरा डर। Brain also get accustomed to it, correct? I mean, why the astronomers who are there in the space when they come back, next 2-3 days बंदा पानी पी रहा है ग्लास में खड़े रह के and छोड़ रहा है। क्यों छोड़ रहा है उसको? space में ही है। हाँ, they have next 2-3 days of that coma only. They don't come out from that because they've been there for 6 months and he has been habituated with that. So human being's mind is the best, I cannot say machine, but something which will be very thoroughly observing each and every one. Why is it so? We are saying train your brain. Or kuch nahi, padhai is just one scripture which are coming. But then, if you train to understand what is written there, उसको पढ़ाई नहीं बोलेंगे, enjoyment बोलेंगे। हमारा enjoyment किधर मिलता है? आप पढ़ाई छोड़ के हर जगह enjoyment मिलता है। इसलिए आपका brain उधर जाता है। अगर यहाँ he is actor, if you try to cut short even 50% ना, because you might be the genius. I remember my own science teacher used to tell me, whoever have been a scientist in our time, they were those students who have been knocked out of the science class and told to their parents, ये लड़का science जिंदगी में नहीं करेगा। Thomas Alva Edison, Louis Pasteur, जितना भी इन्वेंटर का नाम लो, तुरंत लड़का बोलते सर मैं भी साइंटिस्ट बनने के लायक हूँ। क्यों कर सकते? मेरा साइंस टीचर भी हर रोज मुझे बाहर निकालता है। He didn't catch the hard work of the scientist. आपने क्या बोला? साइंस टीचर क्लास से बाहर निकाला। मैं भी हर रोज जाता हूँ। सर आपको लगता है साइंटिस्ट बनेगा? उसका तो गारंटी नहीं, but outstanding student जरूर है। हाँ सर, you are right sir. So how much hard work these guys might have done without going to the school, they had become a beautiful or an excellent scientist. तेरा नाम का साइन का क्या है? Yeah. Wait. What is the lecture timing? 6:30. अभी तुझे अलग दो है। तुमको लेकर ही आया। इधर। पानी का बोतल। पानी है क्या? You have missed one full lecture. अभी मुझे डिपार्टमेंट को बोलना पड़ेगा। 5:20 का लेक्चर था अपना। 5:20? हाँ। He is looking at it as if I have done a mistake. You are right. 6:30. चलो। मुझे मालूम ही नहीं था सर। हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं, कुछ क्रिमिनल बोलते हैं, स्मूथ क्रिमिनल्स। एक गाना भी है। 5:20 का था? नहीं 6:30। हम लोग करते जल्दी मम्मी को पूछा, मम्मी ने बोला 6:30 में आ गया। You are perfectly late by 7 minutes. दोनों साइन कर दो। अब उसका अटेंडेंस शीट दिखा उसको, अभी भी टेंशन में ही है। 5:20 का लेक्चर नहीं है सर। नहीं है, अगर मुझे मालूम नहीं। हां देख ले, अभी उसमें अटेंडेंस शीट में क्या लिखा है? फर्स्ट लेक्चर क्या है? You are such a smooth lie. क्या कर? अरे बाबा साइन कर और दे। वही 15 बार बोलता रहेगा, जरा बोल के एक माइंड टाइम हो। Thank you, my boy. Lecture started at 6. Location. देखो, one whole forest I have done, one big video we have completed. 6:30 की स्टार्ट हुआ, 5 मिनट के अंदर ये पूरा खत्म, और तो 7 मिनट में आ गया। Right on. Largest stretch of area. Largest stretch of area
which lies along largest stretch of area which lies along the margins of. There's a lovely video waiting. We will watch this. Let us write something. The Mediterranean Sea. Careful with the spelling. It is located on the western margins in between 30 degree to 45 degree. 30 degree to 45 degree north and south of latitudes. Hey, the same notes that you are having in the volume I am giving, but I know how much easy you can be learning from here. Hey, you got very good marks, you got a paper result. आंसर वैसे सुधा सुधा क्यों रहता है? तो रात भर लगता है टीवी में अंदर घुस जाता है. ए, don't tell me, ये पूरा आंख भी तूने साफ नहीं किया. तो I was right. सर पर मेरे को पता नहीं था ना. एक मिनट रुक जा. Did you have a very good sleep? ये भाई साहब तो स्नान करके आए. सुबह से इधर तो बैठा था लगता है. छुट्टी जाना है आज. सुबह से अभी टाइम मिला है. सर मैं साइकिल चलाने गया था इसलिए मेरा पसीना हो गया. साइकिल तू चलेगा तो नेबर तो थोड़ी आएगी. किसी आएगा. इसलिए मैं स्नान कर गया. And where is your son? What is that? Kunjri. क्या मैं उसको कुछ नहीं. मेरी अच्छी फ्रेंड है मैंने सुना. हाँ है पर नहीं. अरे अखिल से कॉल करता है वो अरे क्यों नहीं आ रहा लेक्चर्स में पूछेगा ना. मुझे नहीं मालूम कि वो नहीं आई. लास्ट टाइम भी यही होता था. सर कल बायो के लेक्चर के लिए आई थी वो. हाँ तो तुमने पूछा नहीं व्हाई आर यू नॉट कमिंग फॉर SST. कल मैं आया था. हिस्ट्री नहीं है. पावर नहीं था. फ्रेंडशिप नहीं थी शायद से. Why? Either you change your brain, which is not possible, or you change yourself. That is still possible. अरे मैंने कहा पर कैंसिल हो गया. अब आए तो आपको पता है. तो एक इनका ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है. किधर तो तू रहता है? I really have a pity for you. So such a good boy for my lecture ना. But then if you say पता नहीं था कल lecture था. आज इतने बजे है और कल उठ के बोलेगा कल भी है. एक बेस्ट कल है. हाँ यूसी का बेस्ट क्या है ना. एक दिन का ही देख लेने का बस. फिर नेक्स्ट दिन का देखने का. बात खत्म. चलो areas. My dear friends, areas. What item you write? Europe, Portugal, Bulgaria. We only say Bulgaria. It's not Bulgaria. It's Bulgaria, France, Greece. Wait, Bulga. सर मैं तो बोलता था बल्गेरिया. आप बोलेगा कि तेरा दिमाग में वैसे ही चल रहा है. फ्रांस, ग्रीस, इटली और इटाली, whatever you pronounce, Romania, Serbia, and it is Montenegro or Montenegro. This is the spelling. It's Montenegro. ये वाला कैसे? आप क्या करना चेक करो किधर है. It's Montenegro. अच्छा ए नहीं ना. Or somebody told me don't pronounce like that. It is Montenegro. That's so funniest pronunciation in it. मतलब वो भी छोड़ना. Montenegro.
So this is also right. I say it's Montenegro. Montenegro. Right? So last time we had shown a video where Adivasi of your side were there. What was the name of the PNG, Puni, Papa New Dunia. देखा अपना गांव का नाम बराबर याद तो तुरंत याद रखा है ना PNG वो क्रिकेट में जाने चाहिए। अरे अच्छा तू एक मिनट तू इतना बड़ा क्रिकेट का फैन है अभी इंडिया का क्या स्कोर हुआ है हाँ 161 इंडिया सेकंड इनिंग में भी 7 and Australia दो परसेंट एक मिनट Australia also 183 181 all out तो इंडिया had a lead अभी सेकंड इनिंग में इसमें से क्या कॉमेडी है तभी इंडिया इज फॉर 7 तो अभी लीड में करता 200 भी नहीं रहेगा तो इंडिया 250 में दिया तो फिर ऑस्ट्रेलिया वो भी मारेगा और बोलेगा चलो सनी का उसका बुमराह भी नहीं है कौन नहीं है बुमराह फिर कौन बोल रहा है इंजर्ड है हो गया वो फर्स्ट टेस्ट में जब उसने हम लोग बोला लेकर बैठ जाएंगे नहीं सर उसका वो वाला हॉस्पिटल को लेके किधर उसको ऐसा तुम क्यों इतना इमोशनल हो छोड़ ना सर वैसे भी WDC का ये हो गया क्या होता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन क्या होता है इंडिया इज नॉट देयर Yeah, we need one more win to qualify, and Sri Lanka needs to beat Australia 1-0. एक बार बोलो इतना तो डिटेल में मैं ना 12th बोर्ड एग्जाम में इंडिया वर्ल्ड कप लॉस करता है बाल को करेक्ट हाँ अरे वो स्नान करके आए and then सर मेरे को 39 है very he told me so I said very easy तेरे को क्या बता 40 क्यों नहीं आए 40 सर 40 गेंद ही नहीं है you sleep less your eyes have become more like an Achilles now Chinese है अरे रुकना फिर खुलेगा नहीं तो फिर Chinese then you have to open your eyes and keep on माचिस का कांडी होगा हाँ अरे सबसे दोस्त लोग से उसका आईज तो दिख रहा है अरे बड़ा करेगा तो भी इतना ही बड़ा होगा हाँ you sleep less because these things are very dangerous हाँ तो बाजू बिल्डिंग का नौकरी ले ले वॉचमैन का नाइट वॉचमैन हाँ और क्या पैसे का पैसा और हाथ में एक मोबाइल रख ले वीडियो गेम चालू है ना तो व्हाट इज दैट स्लोगन जैसे जागते रहो बस प्रैक्टिस करो जागते रहो प्रैक्टिस करो पढ़ाई करता हूँ हाँ तो जागते ही पढ़ाई करने वाला मैं कोई वॉचमैन नहीं करने बोला व्हाट अ बैड फीलिंग चलो एशिया एशिया इजराइल लेबनान ये पूरा लड़ाई चल रहा है इजराइल दोनों को मार रहा है कहां बराबर है लेबनान सीरिया तुर्की नीचे टर्की तो तुरंत महाराष्ट्र में टर्की है क्या कौन है इट्स तुर्की then go to California and San Francisco in North America California and what did I say San Francisco सर साल फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया का उसीलिए तो आराम सैन फ्रांसिस्को बोला तो ऐसा बोला जैसे कि उधर से लैबोरेटरी इधर आता था इधर से उधर जाता था then you write South America चिली गांव का नाम चिली क्यों रखा वो कुछ नहीं पता मतलब जगह अफ्रीका ये इसका गांव है अफ्रीका ओए क्या है तेरा कलर से लोग ऑपोजिट है तो क्या भाई नहीं हो सकते क्या नहीं सर एक माँ पे गया और एक डैड पे गया काली गन्नूर मिर्ची अगर ऐसे तेरा भाई या बहन रहेगा तो कैसे रहेगा ना एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ फुल काला नहीं है अगर हो गया तो क्या करेगा अगर 1 करोड़ प्रॉपर्टी के साथ आ रही है तुरंत बोलेगा ये मेरी बहन ही है अरे वो पैसे कितना रखे जरा दिखा कॉमेडी हो जाएगा लाइफ में है कि नहीं अफ्रीका then you had Algeria Morocco Libya actually this Tunisia वो मत लिखो actually Tunisia भी है Cape Town
Then you had Perth and Adelaide. Yeah, आज के मैच Adelaide पे तो नहीं चल रहा। Sydney. Sydney में। तो ACG में देख रहा हूँ। Adelaide. Adelaide in Australia. That's it. It just run through the towns since these two guys have come. एक ना दो क्या एक सो क्या आया है तो ना धोने वाले को पहले दिखा तो मेरा दोस्त लोग बोलता ना क्या धोआ खा मतलब दोनों एक ही है चुप चुप Okay, you shut your this one mouse. Climate has a dry summer and wet winter. To explain this unusual pattern, we have to consider both our earlier episodes on the tropical monsoons as well as the hot deserts. You might want to view those earlier episodes to really get what's about to follow. Due to the 23-degree tilt of the Earth, the convergence of trade winds in the tropics, called the doldrums, shifts north and south throughout the year. The band that lies on the poleward side of this band is usually dry due to extensive high pressures brought on by the downward component of the Hadley cell of tropical air movement. In summer, this band of high pressure is pushed further out toward the poles, away from the hot deserts and into the temperate zone, causing a long drought in this season. In winter, the doldrums are either back at the equator or in the other hemisphere, so the high pressure area also follows it back that way. This allows more unstable air to return in the form of oceanic westerly winds, which, when blown onto westward facing coasts, bring rain. This explains why the Mediterranean climate zones lie on the western fringes of each continent. The presence of the Mediterranean Sea at just the right latitude allows these westerlies to gather continual moisture as they travel east, extending the winter rain all the way to the coasts of Lebanon and Israel at the far end of the sea. The consistency of this climate type is well illustrated by comparing city graphs from the west to the east of the Mediterranean. We'll talk more about the westerlies in the next episode on the oceanic climate, since they are the dominant component of weather in those regions, lying immediately poleward to the Mediterranean areas. Because the Mediterranean summer is uniquely drought-filled compared to all other climates except deserts, this peak season of heat is accompanied by low humidity, what Californians love to call a dry heat. As perspiration is more efficient in dry air, this heat is a good deal more comfortable than, say, the humid summers of Georgia or Florida at the same latitude. There are two subdivisions of the Mediterranean climate. The sea, at just the right latitude, allows these westerlies to gather continual moisture as they travel east, extending the winter rain all the way to the coasts of Lebanon and Israel at the far end of the sea. The consistency of this climate type is well illustrated. चलो जाने दो ये मशीन चलो चलो इसको बोला था शान रखे हैं चलो लेट्स मूव did we say climate write on the heading climate as it lies between tropical deserts on the equator side and cool temperate west margin cool temperate west margin देख लो मुझे थोड़ा आया था लेकिन बहुत अच्छा वीडियो में जाता है इसको बंद और एक बात नहीं है cool temperate west margin on the polar side the poleward side there I am giving polar side you understand na or pole side don't write polar side
summer temperature. Summer temperature is between. He's doing his work. Why you guys are cooking there? ये तुम क्या क्या करते देख लेते हो फिर मैं कुछ करेगा ना फिर सेटिंग चालू हो जाए डोंट सी देयर ये मेनली ना दो क्या है स्नान करके 8 degree, 20 to 28 with the hottest month, 30 degrees Celsius. With the hottest month, 30 degrees Celsius. Next. During winter, the temperature ranges between 6 degree to 10 degrees Celsius. Let me explain here. So, look at the summer temperature and look at the winter temperature. Where you feel maximum variations? Summer. 20 to 28. So 28 for you and me in Maharashtra, we feel it is cooler. And what is the temperature in winter also? It is not very cool. So when we use the word annual range of temperature, you know what is range? Highest minus the lowest. It might be hardly 10 degree. अगर 28 से अगर मैं -6 करूँ कितना डिग्री का डिफरेंस है? It's only 12 degree का difference. So throughout the year, you feel it is always a picnic time for us. So hopefully we enjoy a lot of beaches also, naturally. Right? So you can see the visitors are attracted here. Once the visitors are attracted here, sorry to say, the national income just pours in. The only country where national income is 75% is Switzerland. And अगर और एक fact बताऊं, Switzerland is the only country till date in the world जिसने आज तक कोई भी war नहीं लड़ा, कोई भी war नहीं. But history में शायद records है कि 100 soldiers of Switzerland lost their lives in Second World War. How many soldiers? 100. I think in 1950 only they created a memorial for them. Only 100 soldiers लोग मरा. जबकि इंडिया में कितना मरा अभी तक काउंट ही नहीं है. हाँ, 19,000 plus in First World War, 26,000 plus in the Second World War. ये तो ऑफिशियल काउंट है. और मेमोरियल अभी मोदी जी ने आके बनाया. और ब्रिटिश के लिए बड़ा छतरी के नीचे उसको खड़ा कर दिया, सेंट विक्टोरिया पार्क बना दिया, है ना? क्वींस रोड बना दिया. जिसने हमको मरवाया उसी के नाम पे सारा बिल्डिंग. और जो मरा, उसको हटा सकता है. So this is the tragedy of India. एक retreating beach करके ceremony है. 15 अगस्त के बाद भी आप 2 दिन के बाद evening में देख सकते हैं. And 26 Jan के बाद. Retreating ceremony में the drummers used to play the tones of England Maharani. हाँ, till 4 years down the line. And मोदी जी ने बोला वो बंद करो. अब शिवाजी महाराज और हिंदुस्तानी म्यूजिक बजाते हैं. And they sing that also. And हमारा जो नेवी का जो फ्लैग था उसमें यूनियन जैक लगा हुआ था. ये रिमूव दैट. अभी हमारा शिवाजी महाराज का नेवी का सिंबल उसमें लगा. So that is the proud India and proud history. That why are we keeping the British signs into my national flag? No matter what I'm saying. So when you go to these regions called Mediterranean, you'll always feel it is a picnic spot. Why? Summer temperature ऐसा है 20 to 28. Winter temperature 10 to 6 degree. It is neither very hot nor very cold throughout the year. And light drizzle, rainfall, good clean beaches. तो आपको हार्ड वर्क कुछ नहीं करना है. क्यों? अरे 12 महीने का टूरिस्ट आता रहता है. अगर आपका एक रिसोर्ट है, हो गया. आपने कैप्टेरिया डाल दिया, हो गया. सर मैं पानी पूरी का ठाला डालना भाई इंडियन में
Sir, vada pav wo bhi dal. Matlab, understood what I am trying to say? You are not doing very much hard work to earn money. This is what modern tourism is. Right? Sure, let's continue. I hope this video is coming. Sir, it's temperature बढ़ा सकते हैं. बढ़ा सकते हैं और You want to say it is directly firing on him, na? And the room is small, AC is a little bit powerful. Mediterranean summer is uniquely drought-filled compared to all other climates except deserts. This peak season of heat is accompanied by low humidity, what Californians love to call a dry heat. As perspiration is more efficient in dry air, this heat is a good deal more comfortable than, say, the humid summers of Georgia or Florida at the same latitude. There are two subdivisions of the Mediterranean climate within the Köppen classification system, both of which share the dry summers and wet winters just described, and differing only by temperature range. The first and most common form is CSA, which experiences a hot summer of at least 22 degrees averaged across the night-day cycle. This is known as the hot summer Mediterranean. Where the average summer temperature is below 22 degrees, this is known as the warm summer Mediterranean and has the Köppen code CSB. So where in the world do we find the Mediterranean climate? Well, the short answer is on every inhabited continent except Asia, which lacks the necessary west coast. We begin in Europe and the sea from which this climate gains its name. To the west of the Mediterranean, out in the Atlantic, the Azores experience warm, dry summers and wet winters. Moving east onto the Iberian Peninsula, we find the cooler CSB variant of warm summers and very wet winters in the north of Portugal and northwestern Spain. Further south, we move into the hot summer CSA variant that Portugal's capital of Lisbon experiences, along with most of Spain and its capital Madrid. In the extensive interior of this peninsula, however, some areas are so dry that they are classed as cool semi-desert. We'll pick these up in a future episode. The wet winters that define the Mediterranean type extend deep into Morocco on the North African coast, and as we move east into the western Mediterranean basin, the entire Algerian coast and northern Tunisia also fall within this climate. All the islands in this area have this climate: the Balearics, Corsica, Sardinia, Sicily, and Malta. The north coast includes the luxurious Côte d'Azur of France, and this coast extends east into Italy, the heart of the Mediterranean, where the dry summer, wet winter pattern extends inland across all western and southern provinces, including the nation's capital, the Eternal City, Rome. Continuing east across the Adriatic Sea, much of the coast of Croatia and all of Albania are within this climate zone, along with all of Greece, including its legendary capital of Athens, and all of the Greek islands. Now firmly into the eastern Mediterranean basin, we reach the long coastline of Turkey, where the wet winters and dry summers extend well inland, encompassing that country's largest city, the ancient metropolis of Istanbul. Finally, at the eastern end of the Mediterranean, the coast turns south into Syria, Lebanon, and Israel, including the cities of Damascus, Beirut, and Jerusalem. In North America, the entire west coast of the United States comes under the influence of this climate. From the coasts of Washington and Oregon in the north, with their very wet winters, this is the largest area on Earth where we experience the warm summer CSB variant of this climate. As we head south into California, the winters become shorter and drier, the summers longer and hotter, and we have the classic CSA Köppen variant. An exception is San Francisco, which stays much cooler than the surrounding area due to the proximity of cold ocean currents, which often shroud the city in fog. As we reach Southern California and the massive conurbation of Greater Los Angeles, fog and coastal cloud is still present but less common, and summers hotter, especially as one moves further inland away from the cool ocean. The last stops for this climate zone are the cities of San Diego and Tijuana, lying on each side of the US-Mexico border, before the climate gives way to the hot desert of Baja. Moving now into the southern hemisphere and South America, we encounter this climate in the cooler CSB form, worlds away from its namesake, along the mid-coast of that longest of countries, Chile. It's in this zone where most of that country's population lies, including the main port of Valparaiso and the capital Santiago. In Africa, south of the Namib Desert, we find the extreme southwest of South Africa,
caught by the wet winter westerlies of the Mediterranean climate, most notably around the city of Cape Town, famous for its dramatic backdrop of Table Mountain. The last continent to experience this climate zone is Australia, where it brushes two parts of the south and west-facing coasts, firstly around Perth, the most isolated city in the world in the far west, and again around the mid-southern city of Adelaide. Despite its dispersal across so many continents of the globe, the Mediterranean climate is proven as a particular inconsistent type by comparing temperature and rainfall graphs across each of these areas. So what kind of landscapes and vegetation do we find in the Mediterranean climate? Throughout the world, plants have adapted to survive the drought of summer, which, occurring at the hottest time of the year, places a particular challenge due to the very high evapotranspiration rates. The CSA hot summer areas all have a similar and distinctive look, something like the semi-arid desert where shrubs form the dominant plant life, separated by patches of hardy grasses, bare earth or rock. A distinctive hallmark of Mediterranean plants is the greyish-green appearance, a product of the hard, waxy layer of leaves designed to hold in moisture during the hot summer drought. In the cooler and wetter CSB areas, shrubland gives way to forest, and it is in such areas within California that we find the tallest trees in the world, the sequoias and redwoods. In Australia, the eucalyptus tree has adapted particularly well to summer droughts and is found throughout that continent. So successful is this family of trees in this climate that it has been exported to other Mediterranean climate zones where it has thrived. In terms of agriculture, the Mediterranean areas have two world-famous crops, grapes and olives. The drinking of wine from the fermented juice of grapes has gone on in the Mediterranean and Near East since ancient times, and in the last 2 centuries has been exported to all other Mediterranean climate areas, as wine drinkers will know from seeing bottles originating from California, Chile, South Africa and Australia. The pressing of olives to produce olive oil has also gone on since ancient times, and to this day the oil is valued across the world for its health properties as well as its distinctive flavor. Many other crops are grown in these regions, of course, particularly wheat and citrus fruits, but these are more common in other climates than grapes and olives. The Mediterranean climate type is an example where climate has directly had an impact on humanity outside the world of agriculture. In one case, the Mediterranean itself is the world's most popular tourist area, seeing 1/3 billion visitors per year. With its endless coastlines and historical and cultural attractions, tourists come here in the summer knowing that they can enjoy guaranteed sunshine and warm weather. A second example is less obvious, and that is the world movie capital of Hollywood, California. In the early days of movie production, when film needed bright light, production companies located to Los Angeles, where for most of the year they could be guaranteed bright sunshine and no rain that would otherwise interrupt the shooting of movies. So don't you feel that we should be living in somewhat cities like these? You'll never ask for any break. And their country's work culture is not like India. उधर हफ्ते में only 4 दिन ही काम करने का.
हाँ बस ओके इंडिया में अभी हफ्ते में 8 दिन को बोलेगा वो भी करना है बोले 9 दिन भी है सर 9 दिन नहीं होता बस ऐसा है क्या जितना भी काम हाँ अभी आई एम वर्किंग फॉर लास्ट सो मेनी 7 दिन अभी संडे also I work fully the last 2 Sundays I am not getting so I get little bit but that is wrong man you have your own personal life and everything but क्या करेंगे डिमांड है स्टूडेंट का तो करता हूँ पेमेंट करता हूँ पैसा मिलता है but पैसा एक टाइम के बाद not important ना if I am losing my health which by God's grace is still now better but then what will happen extra money इधर से कमाएगा और वो उसको चीनेगा कौन डॉक्टर हाँ he is right इससे अच्छा मैं काम कमाता हूँ है ना और डॉक्टर को नहीं दूंगा आराम करो so my friend is like that from Norway was there only 4 days they work from Friday onwards they pack their bag and they move out of their town and directly Monday they come फिर Monday Tuesday Wednesday फिर से Thursday से Saturday को बाहर निकलते हैं थर्सडे को हॉलिडे चल जाते हैं 4 दिन हाँ और बोलता है हमको ऐसा लगता भी नहीं है कि हम काम करते हैं मतलब यार तू गिफ्टेड है यार मैं क्या करूँ ना मैं नॉर्वे या यूरोप में आके बस जाएगा तो मेरा फैमिली को कौन देखेगा हाँ वो भी है तू जब भी आएगा मेरे साथ 10 दिन रहने का 10 दिन में थोड़ी मुझे मालूम पड़ेगा he has done jumping from 10,000 feet plane अभी रिसेंटली वो भाई साहब वो कौन सा ग्लाइडिंग इसको तो हालत खराब हो गई चिल्ला तो पैर जो ब्रिटिशर था इस 57 years old उसके नीचे ही है बोलते जैसे ही ग्लाइडिंग किया it is from top he is unable to put his leg on that particular two side मतलब वीडियो देखिए मुझे बेच जाता है हाउ गुड आई लुकिंग ये हवा आ रहा है ना सर अलीबाग के बीच में होता है वो पैराग्लाइडिंग वो टू साइड से सर लेकिन उससे पहले पानी में डिप भी करता आप बोलते हैं कि बेली लैंडिंग करते हैं हाँ पूरे नाक के अंदर पानी है मेरा तो किया वो तो एक तो साइड ऊपर से नीचे सर बहुत अरे बट वो तो स्टीमर खींचता है और यू आर गेटिंग ना ही इज जंपिंग फ्रॉम अ हाई माउंटेन and it is gliding left and right वो सिखा भी रहा है you pull this rope it gets this side इसका तो हालत है कहां से रोप पे वीडियो में दिख रहा है और ये बहुत मजा हां देख रहे हो and pull this rope वो पूरा gliding ऐसा जाता है and when it is landing you are so terrified राइट so it is मतलब अभी वो बंदा 10,000 फीट से कूद रहा है तो तभी भी बोला मेरा तो हालत ही खराब था anyway parachute fellow is there he is be down and this will stop but कुछ भी होगा तो है ना nothing you can do अभी आप बोलो ऑफिस में काम सर आपने कभी पैराग्लाइडिंग किया मतलब वो क्या होता है सुबह से शाम तक ये पागल का मुंह देखते है ना चलो लेट्स फिनिश मेरा भी टेम्परेचर दिया हां देव वो भी दे दिया ना नेक्स्ट यू राइट डाउन due to temperate cyclones from west to east due to temperate cyclones from west to east rainfall of decreasing order chapter 14 about it क्या करेगा है ही कैसे ये हो गया तो फिर एक बड़ा चैप्टर है पोल्यूशन then we are away from that and we say geography I have taught you some map for this अच्छा तो इसके बाद वही करें डायरेक्ट पोल्यूशन humidity होगा okay let's go a little bit faster now okay what did I say decreasing order लिखा next in addition to all these cold polar winds in winter like Mistral you remember we have studied Mistral or Mistral ब्रैकेट में डालो राइन वैली क्या रोन वैली लिखा राइन वैली रहेगा या रोन वैली लिखो देखो मैं चेक कर लूंगा ना वेट लेट मी चेक हाँ रोन ही है आरएचओ रोन वैली एंड बोरा ये भी है in North Adriatic Sea cause great devastation
आपको there's a poem of hemlock tree ना, hemlock tree, तो ये poisonous भी होता नहीं है और ऐसे स्टेट में लीव्स में इसमें poison लीव्स में रहता है। Next. Rainfall लिखना। Rainfall is experienced mostly in winter. Rainfall is experienced mostly in winter. With annual average rainfall. देखो rainfall भी कितना मजा है 35 to 75. You understood? It's not like Mumbai. भरेगा तो पूरा गटर भर के ऊपर है ना? मतलब 35 to 75 मतलब it's like drizzle. You feel like going and playing football. I don't know how many really loves football in that monsoon region. Especially it should be a lush green field and rainfall be having an energy. It's like drizzling. And they will never come out. And they are not very harmful also. Right? So I always believe that nature has made everything perfect. And the only imperfect thing the nature has made is you and me. Is it right? Yes. I say yes, it's perfect. We always believe you have to teach, you have to make the person understand. Look, I was explaining my little bit of college students masti. So इसने बोला सर उससे भी बड़ा इधर बैठा है. So instead of making them shout, making them beat, make them understand. And it is okay, it is a masti. And you do it. But don't make it a habit. What does it mean? The nature has made you and me to enjoy the nature. And what are we seeing? Where is the nature? Where is the nature? All finished. In our own area, if you circle around, where is the greenery? Where is the greenery? Only tall buildings. है ना? अभी वो मोराज गार्डन के बाद में जो tall crackpot बना देखा? Hardly 2 साल भी नहीं रहेगा, बन गया. How much wind it can obstruct to the other buildings such as Guru Samriddhi hai, Bhumi Raj hai, nothing will be there. Even sunlight को भी रोक सकता है. And how much deep they might have gone piling, how much disturbance to the area. I'm not saying कि don't build, builder है भाई, वो अपना property या कुछ भी करेगा. But you see, जितना भी मैंने area देखा, they have horizontal expansion only. Vertical building भी है, ऐसा नहीं है. Seattle, California. But majority of the picnic towns are all horizontal. You know what is horizontal? Hardly 2, maybe 3 story, and beautiful there. And they want to live in India. में भी वो culture आ रहा है. Bangalore में एक है, मैं बताता हूँ. They are making houses. It's more like a container houses. Houses is limited, but green is correct. Green area is maximum. आप लेके जाना जंगल के बीच में ले रहा नहीं ये created jungle, but too good actually. I think if you have known who is Dharmendra in Dharmendra in movie is very strict fellow. Sunny और बाकी जो भाई है last fellow that what is that not उससे भी नीचे करता है बहुत बड़ा है सबसे. He is the only person who has detached himself from his dad and he has made a house. आपको लगेगा भाई साहब ये house तो ऐसा bamboo trees है, greenery है, wooden plank बना है, ऐसा लगता है कि जंगल में रह रहा बंदा है. Too good. And वैसा हाउस से हम बाहर निकले तो लगा ठीक क्या पोल्यूशन है यार लेकिन करके तो कुछ है मतलब that much amount he has given fine cutting. हम और आप क्या करते हैं विंडो में 4 डब्बा रखते हैं है ना सुबह शाम एक डब्बा पानी डालना नीचे से स्टार्ट हो गया तो क्या हो गया ऊपर से भी तो डालते हैं और मैं क्या करूं तू भी डालना नीचे पानी. This is our greenery. I mean, I cannot say that we want to become like that. We all. अरे वो salsa dance में सब एक गाने में नाचता ना. He is the youngest son of Dharmendra, and he is totally separate from his family. नहीं और कुछ बताता हूँ. अभी तो वो विलन का जो रोल करता ना उससे नीचे. बॉबी देओल का छोटा ब्रदर है.
show you those. SND25 हेमा मालिनी के 2 लड़की है और उसका पहला वाइफ का 3 या 4 लड़के लोग हैं उसका। राइट नाउ रेनफॉल किया मैंने। Rainfall is only in winter. Which is moderate. Bracket में लिखना 35 to 75. And climate is pleasant, bright and sunny. Next. The last part, natural vegetation. Deciduous type of trees well adapted to deciduous types of trees well adapted to long summer drought-like conditions. Exact drought name, but drought-like conditions. So well adapted with long roots, thick barks, not as barks, branches here, to retain moisture in the summer season. To retain moisture in the summer seasons. That's it. अभी chestnut, maple, hemlock, hemlock tree है. Towards Northern America. Next point. Towards Northern America. And this entire things now you learn from here only, because in I don't know board exam, I got to be entire northern region. Northern American, Northern American region, rich flora. वो बुला रहा है आगे लगा तेरा कान में क्या डाला है बोलना उसको बोलना पहने क्या तो बुलाने से अच्छा पूछना प्लीज गिव मी अ पेन करके वो कान वो कुत्ते की तरह नीचे डाल के सोता है नो व्हाई डज द डॉग पुट 1 ईयर ऑन द फ्लोर मेरा पापा मजा करता था जस्ट फ्लोर तो जमीन दे आर सो ट्रिक अभी अगर तू थोड़ा भी ऐसा पैर रखा ना तुरंत वो अपना सर उठाता है बिकॉज़ दे वांट टू सी द वाइब्रेशन ऑफ दैट पर्सन कि कौन आ रहा है देयर आर सो मेनी डॉग्स अभी यू रीड मराठी में मैं बताता हूं देखिए दे से कि these dogs will never sleep in the night never और उसको चेन में भी नहीं बांधने का बांधा तो फिर एकदम खतरनाक हो जाता sleep in the night मतलब क्या है ना they are watch dogs guard dogs और दिन में भी कम सोता है इंसान उसका 3 गुना उल्टा है ना उल्टा ठीक है नहीं है मेरा डॉग मैं जब जागा होता सोता है पर रात को मैं हम सोते हैं तो वो सोता नहीं है वैसे और कुछ नहीं रहा गोल्डन रिट्रीवर ओके वाइट वन मिला हां वाइट वन ना गोल्ड या स्टिल गोल्डन वाइट वन नहीं वो हमारे तो इवनिंग में सोते हैं अरे हम लोग ना पहले बोलते जो डॉग्स को रखने हैं ना ऐसा बंद फ्लैट्स में रखने हैं फ्लैट में नहीं है ओपन है मतलब गांव में रहता है so that is the reason and the one that I'm showing now it has from my place it is this much Rajapalayam when it opens the mouth one head of the person can be easily fit into the mouth सर 2 बार टेबल को काटा से हाथ में सी रात को आ रही थी तो काट ही ऐसा पालने का ये क्या है डॉबर ना हां बस छोड़ दे तो तुझे भी कब काटेगा वो भी सोच नहीं बिगड़ी काटा आज तक तूने जब तक वो दे दिया तब तक नहीं सब प्लेन भी नहीं काटता और डबल में हां आपको लगता है where in which place you are living in मैंगलोर तो है जल्दी ये तुम्हारा वो नहीं साइड में से पेड़ है नहीं ऐसा अरे वो इंदुली का मूवी में करता तो
मैंगलोर में ही है ना उसमें आदिवासी। अरे वो मूवी जो बना है उसका पार्ट 2 भी आ रहा है। उसका कांतारा। What do you call that performance? वो कुछ कुछ नहीं पता सर पता है सर, मैंने लाइव देखा है मेरे सामने वो डांस करने का। हाँ डांस होता है वो सर उनका स्टोरी ऐसा है कि वो अपने माँ के पेट से कुछ भी with the face of a pig, one more avatar of Lord Vishnu. नहीं पता है वो उसको And मंजूर नहीं बोलते हैं। हार गया है And उसका फेस्टिवल का नाम क्या है? वो कोला हाँ कोला, देखा है उसका गाँव में होता है। याद है। I really fancied by सर मेरी मम्मी के घर पे साथ है क्या ये ये भगवान साथ देखा उन सातों का डांस सुबह तक होता है, देखने में अच्छा लगता है। जागरण एक तो कच्चा चिकन खा लेते हैं, मजा आता है देखने में। तो हमारे यहाँ पे मंदिर में आके देखते हैं इंसानों की सर अगर श्री बोलो ना उसके सामने क्या क्या उसको नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ because in my hometown there is a god where you have to get a small bakra. And हाँ वो भी देखा मैंने, बकरा ना गला काट देते हैं and it drinks all the milk of that bakra and throw it out. Blood, sorry. And अगर मैंने जाके बोल दिया ये क्या चल रहा है तो then I am done. I thought आधे घंटे के अंदर कम से कम उसने 20 गोल्ड का खून पिया रहेगा। मैं अच्छी वो हमारे इधर जागरण में कोई तो आ जाता है, हम लोग डांस करते करते मारते ऐसा और पैसा मांगते हैं बाद में। नहीं वैसा नहीं, मतलब हम लोग ही जाते हैं अंकल और all these things get सर कभी-कभी वो कुएं के अंदर ही कूद जाके मर जाते हैं। हाँ ये मूवी में भी ऐसे ही दिखा है ना, ये उनको पकड़ना पड़ता है, वो पकड़ने के लिए ये रांझा रणजी नाम नेवर कम्स बैक। उनका डैड उसको बार-बार दिखता देखो 8-7 लोग तो ऐसे कॉर्नर्स में खड़े रहते हैं भागा तो पकड़ने के लिए। कौन भगवान? एक टाइम हम लोग मैंगलोर जाने का और वो भागा तो आता नहीं है वापस। इंसान होता है इंसान ही होता है लेकिन but they get that spirit that is the kind they behave and they can tell the truth of each and every फ्यूचर भी बता सकते हैं। प्राटी ऐसा then you have to be very strong to see all that another डर के भाग जाएगा। नहीं सर मुर्गियां वाला काटते हैं और उसी वो जो पाइप होता है ना पैर चूसता है वो पूरा से। So रिएक्शन भी कुछ दे नहीं सकते ना। let's come back ये here. वाला करते हैं एक बार बोला आंख के ऊपर कूद जाएगा। Okay, let's come back. Dominant species of trees are chestnut, maple and hemlock. Dominant species of trees are chestnut, maple and hemlock. I think we have lovely poems on these trees. You should, I don't know. I always feel like I cherish teaching some part of English, but hemlock written. Next, towards polar regions, and the older vegetation अलग है. Cedar, pine, towards polar regions. Cedar, pine, fir. I mean, brooch भी आएगा, brooch. बीच है। Cypress, pine, fir, and cypress are found. वो हीरो का नाम क्या है? तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऑफ द मूवी है। आई द प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऑफ द शेट्टी है। हाँ बहुत सारा सीधा सा नाम तीन या 2.5 करोड़ के अंदर ही वो मूवी बना है। वो बोलता है कि जब वो एक्ट प्ले करा था उसके यस डन ट्रेमेंडस। वो लास्ट का तो एक्टिंग तो वो लास्ट में खुद बोला कि उसको ऐसा लग रहा था। वंडरफुल। आई लव दैट मूवी कांतारा। पार्ट 2 में शेट्टी का बेटा है बोलते हैं सुनील शेट्टी का। कुछ पार्ट में भी कृष्णा पांडे वो जो लास्ट में आता है वो किसका करते हैं? वो बग्गा रेड्डी, प्रताप रेड्डी। वो जो बहुत गंदा संदेश लगे को लिखी के ना ले जाता है। हाँ नहीं वो लास्ट में जो ये लड़का मारता है। अब लोग ने पार्ट 3 भी ओपन रखा है ना। लैंग्वेज। Because when that first fight is seen, it is seen in Japan. जबकि वो फाइट पूरा शूट हुआ विशाखापट्टनम में। हाँ, and there he dies.
No sir, he Rishabh comes out. Shetty. हाँ correct. And भाई साहब is very humble. वो बोलते हैं कि नहीं मैं तो मूवी सोचा भी नहीं इतना बड़ा हिट होगा. And it was a normal movie ना ऐसा लगेगा कि वो टाइम पास ही कर रहा है पी रहा है मस्ती कर रहा है पर पूरा मूवी उसी के ऊपर घूमता है पूरा movie. And वो टकलू है ना he's a Tamilian fellow that police. He's वो also मना करता है उधर. हाँ you should watch once. ये किसमें बेस्ड है? उसी पे. कोलर पे फंक्शन पर ये क्या मंगरूली. मंगरूली what is that? ये स्मगलिंग. Mowgli. भगवान का नाम क्या है? पंजुर्ली. Panjuri. That's a Mangalorean word. And what they have shown, what these people are doing in the jungles, and how the trees are cut and sold, and how that. मैंने देखा है सर. And what is that bull buffalo race is known as? कंबुला. Kambula. चल. मैं तू चल रहा है.